Om Asato Ma Sadagamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mityorma Amritagamaya Om Shanti Shanti Shanti. O God, lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death and mortality. Om, peace, peace, peace. It gives me immense pleasure to be with you all in this afternoon. I must thank Ghosh family, particularly Tara Ghosh, his daughter, his son, and others invited me to this satsang, we call it. Actually, first time I have come to Australia. It's a beautiful city. The object of visit is this, that I would like to visit the Vedanta Center in Australia as well as Auckland. There are 5 Vedanta centers in Australia and 1 in Auckland, that is New Zealand. Dear friends, nowadays we are passing through very critical time. Critical in the sense that we are not having the mental peace. If you ask any person, what is the problem with you? He or she will tell that they are not happy. Though they are happy, but that happiness is in impermanent nature, not permanent happiness. And everybody wants peace, as I just chanted the Vedic mantra, the peace, peace, peace. I think, I'm sure, the happiness or peace is most wanted thing in human life. Everybody wants peace. Now question comes, how to get peace of mind? Now let me go back to the life and teachings of Bhagavan Buddha. Here I was sitting in the drawing room, I saw the Buddha's pictures. Buddha has nicely explained what is the cause of unhappiness, cause of restlessness. Buddha has nicely explained it. All of you know the great Bhagavan Buddha. He was a prince of Kapilavastu city or the state. And his father kept him in a very comfortable way, so the worldly misery wouldn't touch him. But one day, Lord Prince Siddhartha was very much disturbed, and he was thinking only enjoyment and comfort. So one day he asked his chariot, bring the chariot, I'll go around the city of Kapilavastu. And Prince Siddhartha come across the 4 sins. Perhaps most of you know that a person lying on the road and is suffering and shouting and physical agony, physical suffering. Then Siddhartha didn't have any idea why this person is doing like this. Then his chariot said, sir, this is called disease. This person is diseased person. Then Siddhartha asked, the same thing will come to me? Yes, one day or today or tomorrow, you'll get the disease. Then another scene,
the fourth person carrying the dead body, as you all see. Then Prince Siddhartha asked, what is this, what they are carrying? Then charioteer said, sir, the fourth person is carrying dead body. If one person is dead, and he'll be taken to the funeral ground or graveyard, and then Siddhartha is becoming what is called restless. Why? Person is dead. Death will come to me also. Yes, sir, death will come to you also one day. Then a person, another scene, he came across another scene that a person, old person, is tottering on the stick. And what is this? Why is tottering like this? Then charioteer said, sir, this is called old age. Dear friends, then Prince Siddhartha came back to his room and tried to meditate, and he realized that everything is dukkha, misery, misery, misery. That is why I said, dukkham, dukkham, sarvam dukkham. Because the human life is full of misery. Full of misery. Then how to get rid of this misery? There must be some way. What is the cause of misery? First we have to find out. And Bhagavan Buddha, he became Bhagavan Buddha after when he got the enlightenment. Then he realized that this dukkha, the world misery, must have some cause. And that cause, he said, Krishna. In Sanskrit it is called Krishna, Kamana, Vasana, or in English it is called desire. The innumerable desires makes a person unhappy. Why makes a person unhappy? Because when the desire is not fulfilled, when desires become frustrated, जब हमारी वासना और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। हम दुखी हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। और ये भी हमें ध्यान में रखना है, कामनाएं वासनाएं अनंत है, अनंत कामनाएं वासनाएं, one after another the desire will come. For example, you have four-wheel car, some model, when you get in the newspaper that some new model has come, then you go for it and you'll buy it. Again after say 6 months or 1 year, another revised model car in the market, then go for it. If in the bank balance you have 1 lakh or 2 lakhs or 1 crore, million, then you will know how I'll increase the amount of money. So dear friends, one after another, the desire will come and you will try to fulfill it. And when your desire will not fulfill, then you will become frustrated. तब हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं. Then stress comes, strain comes. We see people are in strain and stress, the mental tension. इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि अगर आप समस्त कामना और वासनाओं को पूरी नहीं कर सकते हैं और करना संभव इज नॉट पॉसिबल, जितना आपके लिए संभव है उतना ही, it will be wise on your part to be satisfied what you have. जो आपके पास है उसी से आप संतुष्ट रहना चाहिए, but there is no other way. इसीलिए हमें ये सोचना है कि हम हमारी
समस्त वासना और कामनाओं को पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं। इसलिए हमें यही सोचना है कि जो हमें मिला है, जो हम मिल रहा है हमको, उसी से हम संतुष्ट रहें। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? आप यही होंगे, हमेशा करेंगे हाय 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 करेंगे। अब हाय हाय करेंगे, नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप तो ऐसे बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, यू डू दैट। और देखिए, स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम डिप्रेशन में कैसे दूर कर सकते हैं। Now let us go back to Bhagavad Gita. Perhaps you have read, most of you have read Bhagavad Gita. Don't think it is only poetical imagination or dry philosophy. Bhagavad Gita is very practical message, the universal message, and Bhagavad Gita is the art of living. It's the art of living. How you can lead meaningful and peaceful life. All you want to live peaceful life. And Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna has said that you can lead peaceful life, a happy life. And all of you know the Arjuna, the greatest archer of his time, itna bada dhanudhar jodha. When he came to battlefield of Kurukshetra to fight with Kauravas, what happened? He became frustrated, he became nervous, he went into depression. जैसे हम लोग का भी होता है, हमें बहुत समय होता है, जब we become nervous, we perturb, when we come under the stress and stress, then you will find the perspiring, mouth is drying, we cannot speak properly. All sorts of physical symptoms you find when a person get nervous, perturbed. Same thing happened to Arjuna also. Same thing. Such a great warrior, best archer of his time, इतना बड़ा जोधा धनुर्धर, वो क्या कह रहा है? युद्ध करने के लिए आया उन्होंने, came to battlefield of Kurukshetra. But something happened, a kind of weakness overpowered him, and he said, "No, I will not fight." और चुपचाप बैठ गया। आश्चर्य लगता है हम लोगों को देखने। अर्जुन जैसे युद्ध कर और योद्धा कहते हम नहीं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के लिए आए उन्होंने। But unfortunately, a kind of weakness overpowered him and become helpless. Physically and mentally, he was broken. Just read the first chapter of Bhagavad Gita. It is called Vishada Yoga, Despondency of Arjuna. Wonderful. Here is despondency, visad, मानसिक अवसाद, हम सभी को कभी न कभी होता है। कोई नहीं कह सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं हुआ, कभी न कहीं होता है। कभी किसी को ज्यादा, किसी को कम, the मानसिक अवसाद। And मानसिक अवसाद go to that extent कि you become or person become neurotic. And Arjuna became neurotic. Arjuna became psychiatric. He became patient. और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। शोक संग विघ्न मानस है कि I will not fight. Rather, I will go away. I will leave the battlefield. Why? Why Arjuna's condition has become like this? Why Arjuna becomes so depressed and perturbed? Why he is so much strain and stress? Mental tension. सभी को जैसा हम लोगों का होता है। क्यों?
व्हाट इज द कॉज, वो हमें जानना है. पहले डायग्नोसिस होगा, उसके बाद तो इलाज शुरू होगा ना. व्हाट इज द कॉज, डायग्नोसिस क्या है, कॉज क्या है. और हम सभी स्ट्रेन से परेशान हैं, सभी, कोई कम कोई ज्यादा. ये कोई नहीं कह सकेगा कि हम बिल्कुल स्ट्रेस में स्ट्रेन, बहुत कम. वरीज विल बी देयर, एंजाइटी विल बी देयर, सब. Now, if you find the cause of despondency of Arjuna, strain and stress of Arjuna is nothing but the attachment towards his kith and kin, his superior, his relatives, attachment. A kind of weakness. How can I kill my cousins, Kauravas, though they are our enemy? How can I kill them? My teacher, Dronacharya, Bhishma Pitamaha, I cannot kill him. I cannot kill them. If I kill them, then I will incur sin. So the kind of attachment developed, Arjuna developed towards his kith and kin friends, his seniors. And attachment is also a cause of weakness, cause of durvalta, mental weakness. Attachment brings, asakti brings weakness. And Arjuna had the same weakness, attachment. इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गीता 10-15 बार रटो, क्या हो जाता है, त्याग त्याग त्याग. रीड. भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, perhaps you have heard the name of Bhagwan Paramahansa. Bhagwan Sri Ramakrishna is the guru of Swami Vivekananda. इसने 10 बार रटो. गीता करने से क्या होता है, त्यागी त्यागी त्यागी. त्याग, किस चीज का त्याग? In Gita, Bhagavan says, or Gita clearly says, किस चीज का त्याग करना है? क्या हमारे जैसे छोड़ छाड़ के सब चले जाना है, घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ के, यही त्याग है क्या? What do you mean by renunciation? त्याग है, करना है. गीता में साफ साफ यही कहता है, गीता कहती है कि अटैचमेंट का त्याग करो. गिव अप अटैचमेंट. गिव अप अटैचमेंट एंड गिव अप ईगो. अहंकार का त्याग करो. अहंकार का त्याग करो. आप अगर सोचेंगे सब हम इतना ईगोस्टिक है ना. मैं तो कहता हूं ईगो कैसा होता है जानते हैं? ईगो होता है वो वीणा का तार, आपने देखा होगा कितना कस के रखता है, अब थोड़ा सा टच करेंगे तो एकदम झंकार निकलेगा. सो वी आर सो मच इगोस्टिक. ईगो, अहंकार. देखिए ये अभी तो राम लीला का प्रतिष्ठा, ये सब आप देख रहे हैं, बहुत हम आनंद ले रहे हैं. मत सोचिए कि रावण भी बहुत पराक्रमी था, बहुत पराक्रमी था. He was more powerful than Rama. He had got that boon from Shiva, and nobody can defeat Ravana. But Ravana was defeated by Ramchandra. There is also a cause. Ati garbe hate Lanka. Because Ravana was so proud, so egoistic, and that Himalayan ego brought defeat for him. So dear friends, Bhagavan Krishna, Ramakrishna is telling that Gita means you have to renounce your attachment, give up your attachment, don't be attached to all sorts of things, and you reduce your ego. ये सब अहंकार के कारण होता है. Just you analyze, little go deep and think, you will get the answer that why we become stressed and strained.
why we're suffering from mental tension, you will find that one of the cause is attachment, asakti. Then, dear friends, how Bhagavan Krishna removed the attachment of Arjuna? कैसे दूर किया? How? कोई दवाई तो नहीं दी. Bhagavan Krishna has not prescribed any anti-depression drug or anything. But Arjuna becomes so powerful, and at last Arjuna is telling in the Bhagavad Gita, you will find that Nashta mohe sitir labdha tat prasadatma chito. Hey, my God, Bhagavan Krishna, my moha, my attachment, my weakness, everything is gone. Karisse vachanam tava. I'll fight. As you are asking, I'll fight. And all of you know that Arjuna fought the war and won the war. Everything is gone. But how Bhagavan Krishna, what he did actually for Arjuna. So Arjuna again had become powerful. Dear friends, Arjuna was everything. Arjuna was Bahubalam, power of muscles. Arjuna had money power. Arjuna had soldier power, army. Arjuna has great intellect, buddhi balam. Dear friends, all balam. There are many kinds of balam, force, power. Buddhi balam, vitta balam, bahu balam. Buddhi balam. Vitta balam means money power. Bahu balam means muscle power. Everything Arjuna had. So why, having all sorts of power, why Arjuna became so nervous and perturbed? Why Arjuna suffered from mental tension? Why? Because Arjuna was lacking the biggest power. That power is called power of Atman, Atma Balam. Arjuna was lacking that. What is that Atma Balam? Atma Balam is self-confidence. अपने आप पर विश्वास. Arjuna was lacking that. The power of Atman. That is the biggest power. The power of all powers. And that is called Atma Balam. Unfortunately, Arjuna was lacking that. That is why he was telling that he will not fight. And you'll find the whole Bhagavad Gita. What you'll find? You will find that भगवान कृष्ण काउंसलिंग करते हैं ना. जब कोई मेंटल टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास. साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करते हैं, हम ये करो वो नहीं करो, ये दवाई खाओ वो दवाई नहीं खाओ, ये करते हैं काउंसलिंग. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को काउंसलिंग किया. और क्या काउंसलिंग किया? अर्जुन का केवल आत्मा बल के बारे में उन्होंने बताया. How many slokas in Bhagavad Gita? The verses 700. How many chapters? 18 chapters. In 18 chapters, in 700 by 700 verses, Bhagavan Krishna counseled Arjuna, and he removed all his weakness, which overpowered him. Arjuna overpowered. And Arjuna became again powerful. So dear friends, in other words we can say, Atma Balam. In other words we can say, what is called self-confidence, self-reliance. जब हम आत्मविश्वास खो देते हैं, तब भी कोई काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं. You must have that self-confidence. Swami Vivekananda said very nicely
कि ये इतिहास हम देखते हैं, इतिहास है कुछ आत्मविश्वासी लोगों का ये इतिहास होता है. अर्थात if you see the world history is nothing but the history of some self-reliant person. कोई भी व्यक्ति, any person who has become great, just see their life, read their life, you'll find they have full confidence. It's called self-confidence. आत्मविश्वास, आत्म प्रत्यय जिसको हम कहते हैं, self-reliance, self-confidence. And Bhagavan Krishna bring back the self-confidence in Arjuna. And Arjuna became again powerful fighter. So dear friends, that is why we have to understand it. And another thing I'll have to tell you, Bhagavan Krishna has told in Bhagavad Gita, it is failure will come, success will come, everything will come. And failure and success come in a cycle. Sukhani, dukhani, chakravat parivartante. Everybody's life, everywhere. Sukhani, dukhani, chakravat parivartante. Sukh will come, happiness will come, misery will come, failure will come, success will come. It will come, and again it will go. You see, all we are sitting here, just tell, everybody's life, failure has come. Nobody will claim that, no, failure has not come in my life. Failure will come. But it should be pattered. It's a part of life, it's a part of game, failure. But at the same time, success will also come. After failure, success will come. Nothing is permanent. Bhagavan Krishna is telling in Bhagavad Gita, don't think that your failure is permanent or success is permanent. Nothing is permanent. Both of them are impermanent. They come and go. So you must be calm and quiet. Both the cases. It is called, Bhagavad Gita is called Yoga Samatya Uchyate. Samatya Yoga Uchyate. What is that Samatya? Samata is the equanimity of mind. What is that equanimity of mind? Equanimity of mind means when success comes, we get elated, we feel joy. But when failure comes, we become depressed. So Bhagavan Krishna is telling both the situation, you must be unperturbed. That is called samatya. Samatya, that is called English word is that samatya yoguchyate. All right, success has come, it's all right, very good. At the same time, when failure comes, yes, all right, it will come. Welcome. So both the cases, you have to welcome. Sukha and dukkha, failure and success. Then only you can have peace of mind, otherwise you cannot have peace of mind. That's why you cannot peace of mind. अशांति क्यों होती है? What do you mean by अशांति? वो कहते हैं अशांति होती है, शांति नहीं. What do you mean by अशांति? Actually, what is this अशांति? Ashanti means when you are restless. Ashanti means when our mind is scattered. When your mind is one-pointed, when your mind is controlled to some extent, then Ashanti will not come. Your mind will become calm and quiet. When your mind is calm and quiet, not so much disturbed, then only you can have the experience of peace and joy. Just you can thought about it. Why our mind become restless? Our mind is very restless, no doubt about it. Our mind is restless. But it becomes more restless when we crave for something else. When we desire, then mind become more restless. When mind become more restless, you also become restless, and you cannot have peace of mind, you cannot have calmness of mind,
So one way you can say that to have control over mind, if you have control over mind, you will get definitely peace. When your mind is running here and there, and your mind is not focused, your mind is not controlled. You see, all we are sitting here, our mind has gone somewhere else. कोई सोचता है कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. Mind is so restless. Mind is very restless. We see in Mahabharata what is said. Jaksharaj is asking King Yudhishthira, can you tell what is the fastest thing in the world? Yeah, what is the fastest thing? Plane, Sputnik, rocket. What is the fastest thing? Mind. आप बैठे बैठे, मैं यहाँ बैठे बैठे, मेरा मन, within no time, my mind has gone to New Delhi, my ashrama. Within no time. Mind is so restless. मैं कहीं फंक्शन में गया, ऐसा ही सत्संग हो रहा था बॉम्बे में. तो प्रोग्राम देखा, वहाँ देखा मेडिटेशन हाफ एन आवर. तो मैंने कहा कि मेडिटेशन हाफ एन आवर में कह दिया कि आप आधा घंटा बैठ सकेंगे चुपचाप, तो उसको आधा घंटा मत रखिए, 15 मिनट रखिए. नहीं तो क्या हो, आधा घंटा 5 मिनट के शुरू हो जाएगी. आधा घंटा नहीं, 15 मिनट रखिए. पहले 15 मिनट रखा. एंड जहां हो रहा था सत्संग, जिसके घर में हो रहा था, जैसे यहाँ हो रहा है आज, तो दैट लेडी वाज वेरी सिंपल. उन्होंने कहा, स्वामी जी हैव सेड वेरी राइटली दैट 15 मिनट में मेरा मन कहाँ चला गया था जानते हैं? मेरा मन चला गया कि महाराज आए हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के फ्रिज में रखें, सब ठीक ठाक रहेगा तो. और फिर जैसे यहाँ उन्होंने कहा था कि he has made arrangement for say 60 people. वहाँ भी करीब 100 people का अरेंजमेंट किया था. आया 70 लोग. अब सोच रहा था वो कि ये 70 लोग 30 लोग का खाना क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा. तो मन कहाँ चला गया बैठे बैठे मेडिटेशन में. So dear friends, mind is very restless. That is why Bhagavan Krishna, Arjuna is asking Bhagavan Krishna, it's a very what is called, very old question. Since the dawn of civilization, this question has come. What is this question? Now, many people who go to satsang, all devotees and who attend satsang, they raise question. क्या प्रश्न है बताओ? Only the first question there is, Maharaj, how to control our mind, restless mind. मन को कैसे एकाग्र करेंगे? जो करते हैं ये करते, मन को कैसे एकाग्र करेंगे? How to make our mind one-pointed, focused, control. अर्जुन भी पूछा भगवान कृष्ण से, चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म्. How this each and every word of Bhagavad Gita is so practical, so rational. ये मत सोचिए कि ऐसा ही है. Very practical and rational. चंचलिंग मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म्. Oh Krishna, mind is very restless, turbulent. तो अर्जुन भगवान कृष्ण, yes, mind is very restless and turbulent, I know. But one can have control over mind, this turbulent mind, the restless mind. क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? कोई बता सकता है? बताइए. देखिए भगवान कृष्ण ने क्या बताया. अभ्यास ने तो कुंतिया वैराग्य चने के लिए थे. देखिए अभी ये सब बहुत चक्कर चल रहा है चारों तरफ. If you get admission in the 5 months course or 6 months course, if you pay 10,000 rupees, you will get samadhi, you will have full control over the mind. All this cheating the people. अब नहीं, ऐसा नहीं क्यों होता है? You'll find in many places. 10,000 रुपया भर दो, 3 महीने का कोर्स में भर दो, you will get samadhi. What to control over mind? समाधि हो जाएगी. ये सब बकवास है.
just to cheat the people. Bhagavan Krishna, what he is telling? Bhagavan Krishna is telling to have control of our mind. Abhyasana tagunteya vairagya viryate. Nirantar practice, constant practice. We constant do japa, constant do meditation without any break. And another part, most of us do not do it. अभ्यासना तो कुंती तो करते हैं, बैठते हैं सुबह शाम बैठते हैं, टाइम मिला तो जब भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन the second part most of us do not. What is the second part? Second part is अभ्यासना तो कुंती वैराग्य चेन गिरियते. What is the वैराग्य? वैराग्य का अर्थ होता है डिस्पैशन, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन. व्हाट इज डिस्पैशन, ये बताइए. जब हम पढ़ते हैं ना कोई चीज बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, और खास करके भगवद गीता के ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ भगवद गीता बहुत माइन्यूटली से पढ़ना चाहिए, डिटेल्स में पढ़ना चाहिए. डिस्पैशन वैराग्य का अर्थ होता है चीजों के प्रति आसक्ति को कम करना. कितनी आसक्तियां हैं हमारे पास, रोज आसक्ति बढ़ती जाती है. अटैचमेंट गॉन इंक्रीजिंग. कैसे इंक्रीजिंग हो गया? मॉल पे तो आप जाते हैं, अब बढ़िया बढ़िया चीजें देखते हैं, अरे बाप रे ये तो अच्छा, ये तो खरीदना पड़ेगा. ये डेवलप अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. होता है कि नहीं बताओ? हम झूठ कहीं कहते हैं क्या? होता है, यू कैन डिनाई. तो लेकिन जब जितना अटैचमेंट बढ़ाओगे उतना ही तुम दुखी होगे. क्यों दुखी होगे? बिकॉज यू मे नॉट फुलफिल योर डिजायर एंड यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग योर अटैचमेंट. डिस्पैशन का अर्थ होता है अटैचमेंट को कम करना. अदरवाइज नो अदर वे. और मन को एकाग्र करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं. जो भगवान कृष्ण बता के गए वही आपको करना है. डू दैट. कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. योगा करते क्या होता है आजकल? These Babaji and Matajis nowadays, they have dug down the great idea of yoga. योगा करते क्या फिजिकल से? जब मैं बॉम्बे में था, people used to say, Swami ji, we go, where you are going, why early in the morning, going for yoga. And what kind of yoga? Going to the gym and doing some exercise. It is not yoga. Yes, you must have a healthy body, healthy mind for doing yoga. It's all right. Yoga is very primitive thing. Yoga has nothing to do with body. Yoga has everything to do with mind. मन से संबंध है इसका. That is why our father of yoga, Patanjali, perhaps some of you may have read Patanjali Yoga Sutra. First aphorism of Patanjali Yoga Sutra is Yogasya Chitta Vritti Nirodha. What is that? कि हमारे मन में जो वृत्तियां हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, उसको निरोध करना, उसको बंद करना, उसको खत्म करना. तभी आप योगी बन सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन बिकम द कंट्रोल, यू विल कंट्रोल द माइंड. योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है. इसलिए योगा को हम लोग ने ऐसा बना दिया अभी कि शरीर को अच्छा करने के लिए, शरीर को अच्छा रखना जरूरी है. अष्टांग मार्ग जो हमारे लिखा है, पतंजलि योग सूत्र जानते होंगे, समाधि तितिक्षा, ये सब आसना, ये सब है. लेकिन हम तो समझते हैं कि अभी ऐसा ही हो गया है, जस्ट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इज योगा. इट इज नॉट एट ऑल योगा. इट इज नॉट एट ऑल योगा. Simple thing is, the main purpose and objective of yoga, what you understand from time immemorial, to have control over the mind. बस. So सेठी हम कहते हैं कि मन को हम जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही हमको शांति मिलेगी. बंदर को कभी शांति नहीं मिलती है. बंदर कभी भी चुपचाप एक जगह में नहीं बैठा रहता है, एक समय इधर इधर उधर उधर करता है. You are so restless. And Swamiji has given an example, the turbulence of mind, the what is called vagaries of mind,
बंदर के साथ उसका तुलना किया. बंदर is so restless, mind is also so restless. So dear friends, if you want to have the what is called free of what is called mental tension, anxiety and worries. Worries will come, it will not go, it will come. Anxiety will come. Take it in different way. Take it in different way. What is the different way? The ear is a part of game. दुख आएगा, सुख आएगा, अशांति आएगी, शांति आएगी. Everything will come and go, everything will come and go. Nothing is permanent. Take in this way. It is a challenge, no doubt about it. But take it in this way, definitely you will have peace of mind. और कोई जंतर मंत्र है नहीं, कोई दवाई ववाई तो है नहीं भाई. मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए. And you call about the Upanishad. I don't know how many have read or heard the name of Upanishad. बहुत मुश्किल है. कैसा हम जानते हैं कि हम लोग की जानकारी कैसा नहीं होता है. एक गुरु ने कहा एक शिष्य को, go to the library and bring Upanishad. And what disciple has understood? वो तो जाए लाइब्रेरी में गया और उपन्यास को ले उठा के ले आया. He doesn't know what is the difference between Upanishad and Upanyas, because he doesn't know anything about the scriptures. Again, I am telling you, dear friends, the scriptures, Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutra, all these are very wonderful books. And these books are not mere, as I told you, it's a poetical imagination, not dry philosophy. But the message of Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutra is very strengthening, encouraging, dynamic, and vibrant. I tell you one incident. Perhaps you may not know the name of that Swami, great Swami of Ramakrishna Mission. His name was Swami Ranganathananda. He was a great orator. देश विदेश में जाते थे, प्रवचन करते, लोग हजारों लोग खड़े होकर सुनते थे उनको. He was invited by the then army chief, General Jayanta Chaudhary, chief of the army staff, to his house in dining. Then Maharaj was sitting in his dining, what is called drawing room, and Bhagavad Gita was lying on the table in the what is called drawing room. Then out of curiosity, Maharaj asked him, General Chaudhary, do you read Bhagavad Gita lying on your table? Because Swamiji thought, Bhagavad Gita is सब क्या पढ़ेंगे तो लड़ाई हुई है, झगड़ा वो सब. Yes, Swamiji, before going to bed, every day at night, of course, read Bhagavad Gita. Why? Because it gives me strength. It gives me strength. That is why every day before going to bed at night I read Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is very strengthening. अरे कैसा अर्जुन को मजबूत कर दिया. Because I take Bhagavad Gita class in our what is called in Delhi Ashrama. So just I was going to take Bhagavad Gita, and many devotees also was following me to the hall. Then one old lady came. बोले स्वामी जी ये भगवद गीता क्या है, इतने शक्तिदायी है, very strengthening. कैसा? बोले my husband is lying on the bed. दुख होता है, हमको भी दुख होता है, उसको भी दुख होता है, कभी कभी दुख होता ही होगा. Old lady was just thinking his husband is lying on the bed suffering. लेकिन जब भी ऐसा होता है ना, मन को खराब होता है, I read भगवद गीता. मैंने YouTube, किसी स्वामी जी का YouTube खोलते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ उसको सुनते हैं, हमको शांति मिलती है. I get a strength. You do that, definitely you will get a strength. We do not know. Thousands and thousands, millions of people are being inspired
by Bhagavad Gita, by reading Bhagavad Gita. And undoubtedly it is strengthening. इसलिए again Swami Vivekananda, somebody was sitting, somebody here, he was telling that I was talking about the positivity, positive thinking, positive atmosphere. What is positivity? सकारात्मकता क्या है? What is positivity? Nowadays, lot of conferences, seminars, symposiums are going on. The positivity, positive atmosphere, positive thought, positive emotion. What is positivity? What do you think? What is positivity? What is your idea? Let me know. Swami Vivekananda said very precisely, within few words, positivity का अर्थ होता है the power which makes you strong and vibrant and dynamic, and that power is called positive thinking, positive thought, positive emotion. यही है सकारात्मक भावना, जिस भावना से अपने आप को आप समृद्ध कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, जिस भावना के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, वही है सकारात्मक भावना. और जो भावना, the thought makes you weak physically, mentally, morally and spiritually, reject that thought like a poison. समझ लीजिए, जो भावना मन को नीचे गिराता है, take your mind downward, make you weak physically, mentally and spiritually, give up that thought. और जो भावना ऐसा करती है, वो भावना को हम कहते हैं नेगेटिविटी. यही है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का होता है. हम ये अच्छा यार, अगर इससे कहें, हम बहुत संक्षिप्त रूप से कहें, वेरी प्रिसाइजली, इट्स कॉल्ड पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. और कुछ नहीं है, कोई दवाई पानी सब कुछ नहीं है. मन से ही तो सब कुछ होता है, मन से ही सब कुछ होता है. अगर आप सोचेंगे ये खराब है तो मन से खराब लगता है. अब सोचेगा अच्छा है, अच्छा है. अगर मन से आप सोचेंगे आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी. अगर मन से सोचेंगे हम दुखी है तो दुखी है. एवरीथिंग इज माइंड. हाउ विल ट्रेन इट, हाउ विल कंट्रोल इट, हाउ विल हैंडल इट, इट डिपेंड्स ऑन यू. जो मन को नियंत्रित कर सकता है, माइंड को हैंडल कर सकता है, वही उतना खुशी रहता है. Dear friends, actually we are human being, the best creation of God. We have to be the master of our mind. But unfortunately, we are not the master of our mind. Rather, we are slave to our mind. हम मन के दास. मन हमको चलाता है. अरे हमें तो मन को चलाना चाहिए. देखिए तो हम सबको मन चलाता है. We are the slave to the mind, but dear friends, we must be the master of our mind. क्या आप हैं? हम हैं. मन जो कहता है, इसलिए तो मन को नियंत्रण करना ही योग है, साधना है. Whatever may be spiritual practice, we talk about spirituality. Spirituality, क्या है spirituality? Spiritual is nothing but to have controlled mind. और बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने बताया. इसलिए मैं कहता हूं कि मन को अच्छी तरह से देखें, मन को आप कैसे हैंडल करेंगे, और ये सुख दुख, मेंटल टेंशन, ओवरीज, एंजाइटी, ये सब जिंदगी में आएंगे. इसको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा. अब क्या करेंगे? तितिक्षस्य भारत है, भगवान कृष्ण इज टेलिंग इन भगवद गीता. तितिक्षस्य भारत. ओ अर्जुना, ऑल दिस थिंग्स विल कम, यू हैव टू बियर इट. अब दुख आएंगे तो क्या चिल्लाने से दुख दूर हो जाएगा क्या? आपको सहना पड़ेगा.
बुद्धिमानी के साथ आपको दुख को सहना पड़ेगा। अब चिल्लाने से और सारा ये लाल पीला पानी पीने से सब चला जाएगा। ये मन को शांत करने के लिए कंपोज की टैबलेट खाने से सब हो जाएगा? नहीं, आपको सहना पड़ेगा। तितिक्षा, ये बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं जानते हैं कि ये जो है, जो भी ये तो शीतोष्ण सुख दुख दाह, शीतोष्ण ठंडा आएगी, विंटर विल कम, समर विल कम, सिमिलरली the happiness will come, misery will come, and all these are very very impermanent. परमानेंट नहीं है, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं। तांत्रिक शस्त्र भारत लास्ट में कहते हैं इसको सहन करना है, चिल्लाना नहीं है। लेकिन क्या कहता है, हम जब दुख आता है ना, हम अपने को ठीक नहीं रख सकते, वी गेट डिसबैलेंस्ड। क्यों नहीं है, क्यों नहीं करते हैं? हमारे अंदर वो जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, गाड़ी में तो आप चढ़ते हैं, बहुत बड़ी कीमती गाड़ी में चढ़ते हैं, जिस गाड़ी में बहुत अच्छा शॉक एब्जॉर्बर रहता है, गड्ढे में इधर उधर जाने से भी कुछ ये नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर। डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू डेवलप दैट शॉक एब्जॉर्बर विद इन यू, ताकि सुख दुख को एब्जॉर्ब करे। जैसे शॉक को एब्जॉर्ब करता है, गाड़ी में लगा रहता है ना, क्या लगा रहता है क्यों? क्यों लगा रहता है कि शॉक माने जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा भी शॉक होता है ना, मन में दुख होता है, शॉक होता है, इसलिए वी हैव टू डेवलप ए काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अगर शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा तो क्या हो जाता है जानते हैं? पीपल कैन गो टू दैट एक्सटेंट दैट दे कमिट सुसाइड। Dear friends, everybody is telling that Sweden, Australia, other very affluent countries are there, no doubt about it. But in other side, in India also nowadays, other side, having everything, all amenities of life you want, everything is there. But other side you see, other picture, other side of the dark picture, that commit number of committing suicidal, वो दिन के दिन बढ़ती जा रहे हैं। number of people are committing suicide, number is going high day by day. Why? सब तो है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। Why the people commit suicide? To go to that extent? The mental frustration or tension took them to that extent that they commit suicide. Why? इसलिए dear friends, ये पैसे से, धन दौलत से, आराम से कुछ नहीं हो, वैसा हो सकता है, ये कम नहीं हो सकता है। इसलिए शांति जो कहते हैं ना, मैं कमिंग टू दैट पॉइंट, शांति जो हम कहते हैं, इट कैनॉट बी सोल्ड इन द मार्केट और यू कैनॉट परचेज फ्रॉम द मार्केट। द पीस कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से ही शांति आती है। और शांति के लिए खाली रुपया पैसा धन दौलत के पीछे दौड़ेंगे तो आपको शांति कभी नहीं आ सकती है। एक एग्जाम्पल है बहुत सुंदर, डियर मास्क, हिरन जो होता है डियर मास्क, उसके नेवल में कस्तूरी होती है और उससे सुगंध निकलता है, लेकिन हिरन को पता नहीं है, द डियर डजंट नो फ्रॉम वेयर द स्वीट फ्रेग्रेंसेस आर कमिंग, उसको पता नहीं होता है। वो वन जंगल में दौड़ता है जस्ट टू फाइंड आउट इन सर्च ऑफ दैट स्वीट फ्रेग्रेंस, गुड फ्रेग्रेंस, दौड़ता फिरता है और दौड़ते दौड़ते थक के मर जाता है। बट he unfortunately the deer doesn't know the source of fragrance is within his or her navel. हमारी अवस्था भी उसी है, our condition is also like this. हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर करते हैं, घूमते हैं, just to get peace, little peace. But dear friends, you do not know the source of peace is lying within you. ये समझ लीजिए। तो जो भी हो, अभी बहुत समय हो गया है, मैंने जो समझा, just I share with you
भगवान ने दिया है, जो आपको मिला है उसी में संतुष्ट रह जाइए, बी सेटिस्फाइड विद दैट। खाली ये आना 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 आना। एक कहानी कहूँगा करके मेरी वाणी को समाप्त कर दिया हूँ, ऑलरेडी आई हैव रैप्ड अप। एक कहानी है, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव रेड द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, इज वंडरफुल बुक, गॉस्पेल ऑफ श्री राम, वचनामृत हिंदी में कहते हैं। एक सवाल ऐसा ही है, एक घटना ऐसा ही है, वो कहानी कह सकते हैं। वो है कहानी है कल्पतरु वृक्ष की कहानी है। A kind of tree you have read, I don't know, when goddesses and demon, they churn this ocean. After churning, many valuable things came out from that churning of the ocean. जैसे अमृत हम कहते हैं, नेक्टर, और भी बहुत सारे कीमती कीमती चीजें उठ के आई है। उसमें से एक वृक्ष उठ के आया, इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, उसको कहते हैं कल्पतरु वृक्ष। What is the speciality of the कल्पतरु वृक्ष? Anybody can tell? ऐसा हम सुनते हैं, सच है कि कहवत अलग है, लेकिन कहते हैं लोग, इसे पुराण में लिखा है। What is the speciality characteristics of that tree? ये तो हम जाते हैं, फल देता है, छाया देती है ये वृक्ष, ये सब तो ठीक है, लेकिन what is that speciality of that कल्पतरु वृक्ष? बोलिए। Yes, wishful, very good. Wish fulfilling tree. ऐसा ही कहा जाता है कि when you go under the tree and whatever you ask and your desire or asking will be fulfilled by that tree. Wish fulfilling tree, wish जो भी करेंगे। तो एक आदमी घूमते 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 थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। And unfortunately or fortunately, that person did not know that it is a कल्पतरु वृक्ष। वो तो बैठ गया और मनी मन सोच रहा, जस्ट ही वाज थिंकिंग, आई एम वेरी टायर्ड, इफ आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट, तो बहुत अच्छा होता। जैसा ही सोचा वैसा ही ठंडा पानी आ गया, फ्रिज से आपको दे दिया। फिर ठंडा पीने के बाद सोच रहा था, आई एम वेरी हंग्री, अगर कुछ खाना वाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसा ही सोचा, तब सब पिज्जा उजा नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना आ गया, तो खा के बहुत आराम से खाया, बहुत संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हिज हंगर। उसके बाद सोच रहा था, इतना दूर चल के आया हूँ, थक गया हूँ, आई एम सो टायर्ड, इफ आई गेट ए नाइस बेड आई कैन लाई डाउन ऑन द बेड। जैसा ही सोचा, बेड आ गया फर्स्ट क्लास, उस पे सो गया और जस्ट सोने के लिए कोशिश कर रहा था, मन में सोच रहा था, जस्ट ही वाज थिंकिंग कि इफ somebody do मसाज, अगर करेगा कि दुख सब बदन से पेनिंग, उतना दूर चल कर तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर कोई मैसेज करने वाला आ गया, बहुत आराम से उसको मैसेज कर रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है मैसेज करने से, जानते हैं, सो गया। सोने के बाद जब नींद खुली, नींद टूटी, तो क्या हुआ, व्हाट ही सॉ, अरे बाप रे, आई एम इन द जंगल, I'm in the jungle now, it is evening. Now this jungle is infested with wild animals. बाघ, सिंह, भालू सब होगा। अगर कोई बाघ ऐसा आके हमको उठा के ले जाएगा तो क्या होगा। जैसे ही सोचा, बाघ आ गया और बाघ आके उसको उठा के लेके चला गया। What is the moral of this story? ये कहानी का तो मोरल होता है ना, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। What is the moral of this story? Moral of the story is this. भगवान श्री राम कृष्ण ही कहना चाहते हैं कि ज्यादा तुम इधर दौड़ोगे, धंधा के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, चीजों के पीछे ऐसा दौड़ोगे तो तुम्हारी भी अवस्था वैसा ही होगी जैसा वो आदमी का हुआ था, वैसा ही होगी। ढूंढते ढूंढते केवल पैसा, धन, दौलत करके घूमेंगे, करेंगे तो थक जाएंगे और इसकी अवस्था होगी। बहुत सुंदर किसी ने बता रहा था, मैं एक प्रवचन में सुन रहा था कि जैसे बहुत आलीशान मकान, बहुत बड़ा आदमी, लेकिन जैसे जानते पैसा होने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं। और क्या हुआ, और नीचे एक झोपड़पट्टी,
slum. That moneyed man, wealthy man, having no peace of mind. रात को नींद नहीं आती थी, डर लगता था इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, कोई होगा, ADCB आजकल बहुत जानते हैं, इंडिया में बहुत है, लोगों को आ जाता है, पकड़ जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, यू नो. तो और नीचे झोपड़ पट्टी में द स्लम्स, द कॉटेज, वो क्या है, ए फैमिली, वेरी हैप्पी फैमिली. They don't have amenities of life, but लेकिन they are happy. They go for work, come in the evening, शाम को अपने घर में आता है, झोपड़ी में आता है, और what they did some, the lady does some cooking and everything, and they take every day in the evening, and आराम से सो जाते हैं. No anxiety, no worries, no CD, no income tax, nothing of the sort, no profit, no loss. And they are very happy, smiling face. वो जो बड़ा आदमी आलिशान मकान में रहता था, वो सोचा अच्छा ये क्या बात है, I have all amenities of life, हमारे पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा उसकी तरह इतना हम इस खुश क्यों नहीं है? All the time anxiety, I cannot sleep at night, I sometimes spend sleepless night, I take composer, some other thing, just to have good, little sleep. Then he called his manager. Manager को बुलाया. अच्छा बताओ, क्या बात है? मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी हम परेशान हैं, और उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा का वो काम करता है, कुछ रुपया उसको मिलता है, खाता पीता है, कितना आनंद में, और हैप्पी दे आर. बोले सर ठीक है, वन थिंग यू हैव टू डू, क्या बोलो, हमको कुछ रुपया दो, करेंसी नोट दो, एक बोरी नोट देना, हम आपको सब पता चल जाए, वाई इज हैप्पी एंड वाई यू आर नॉट हैप्पी, पर ले जाओ. इतना एक रुपया दे दिया उसको एक बोरी में, और आदमी उसका मैनेजर क्या किया, वो बोरी में रुपया लेके वो क्या किया, उस झोपड़ी पट्टी के सामने रख दिया. जब सुबह दरवाजा खोले, ओपन डोर ऑफ द कॉटेज, बोथ हस्बैंड वाइफ सॉ इज सम bag is just lying. उन्होंने खोला है, just open it. They saw huge currency notes. देख के तो उसका मन बहुत खुश, हा, भगवान ने हमारे ऊपर दया की है. God has bestowed mercy on me. इतना रुपया हमको दे दिया, बहुत आनंद हो गया. थोड़ा देर तक तो आनंद रहा, फिर धीरे धीरे चिंता भी आ गई. What anxiety came? अरे अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, from where you got this money? और इतना पैसा लेके हम कहाँ रखेंगे, ये पैसा को कहाँ छिपाएंगे, बैंक में जाने से तो बोला कि इतना पैसा कैसे मिल गया, क्या करें. धीरे धीरे उसको चिंता बढ़ती गई, एंजाइटी. फिर वो देख रहा है, वो मनीड पर्सन, वेल्दी पर्सन, अरे क्या हो गया रे भाई, इतना खुश था, 2-4 दिन में देखता है बिल्कुल मुरझा हुआ. There's no smile on their face. What has happened? उन्होंने कहा, वो मैनेजर ने कहा कि सर जो बोरी ले गया था ना, बोरी ही इसका दुख का कारण है. That money has taken away his happiness, his peace, or their peace, smile on their face, everything is taken away by that फुल करेंसी बैग जो है, सब ले लिया उसको. देन उसको समझ में आ गया, oh that wealthy person, oh this is the cause, as I told you in the beginning, I started my talk, what is the cause of misery, what is the cause of mental tension, stress. ज्यादा आप मांगोगे तो फिर मुश्किल में पड़ोगे, जो है उसी से मिल जाएगा. And you see one thing, Bhagavad Gita, it is told, perhaps you know that sloka is very well. What is that sloka? ये आप काम करते हैं ना, कर्म जो करते हैं, काम करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवान कृष्ण is telling Arjuna, ये only you have right to work, not the fruit of the action. तुम्हारे काम करने का
तुम्हें अधिकार है, just you have right to do work, but don't expect the fruit of your action. So you can raise this question, how is it possible? I will do work day and night, will not expect the fruit of action. How is it possible? Where you will get motivation for doing work? There is a very pertinent question. लेकिन भगवान कृष्णा ऐसे तो बुद्धू नहीं थे, ऐसे बता दिया नहीं। वो कहते हैं कि देखो गहराई से इसको पढ़ना है, you have to read very deeply. वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि you have no right to fruit of your action. It's quite natural, quite rational. Because you do not know what will be the result of your action. It is like this, you just shoot the arrow. When arrow goes away from your hand, then you have no control over the running arrow. You have any control over the running arrow? No. Running arrow का कोई भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है. Similarly, you do not have any control over the fruit of your action. And all the time if you think what will happen, what action, what fruit I will get, then also it is very difficult. You will be in trouble, land up in trouble. So it is better to just to do work. And another way, if you think in this way, what is that? If you do good karma, you will get what? If you will get good work, honest work, good work, social work. If you do good work, you will get good result. If you do bad work, anything bad, you will get bad result. And this is the law of karma. Nobody can stop it. Nobody can stop it. अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलेगा. If it is so, then why simply you are after this result of your action? Unnecessarily, you will end up in trouble. So it is better, your duty is to do work. और अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलेगा. Nobody can stop it. Nobody can stop it. हम जो बने हैं आज सब बैठे हैं यहाँ, ये हमारा कर्म फल, the past is called प्रारब्ध कर्म, the past life का जो कर्म हमने किया है उसी के अनुसार हमें आज सब कुछ मिला है. आज यहाँ हम सब भिन्न भिन्न रूप से बैठे हैं. It's the result of your past karma. So dear friends, so do your duty. एक बहुत बड़ा वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ा फार्म अमेरिकन फार्म का बना, इज इंडियन, वो इज आवर डिवोटी. one day he came to me and said, स्वामी जी, मैंने कभी नहीं सोचा कि हमको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ये करना है, वो करना है. I did not bother about the promotion. लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी, in my mind, if I do good work, honest work, diligent work, sincerely if I work, definitely I'll get the result. This much only. He never thought of becoming vice president of the company. But what happens? Because he did good work, he did work very honestly, sincerely, and slowly he got the promotion because of his good, honest, diligent work. So यही बात है. इसलिए ये सब सोचना, ये करना, वो करना मुश्किल है. इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ही बोलते उसको एकदम एक नंबर बना दिया. हर युद्ध का उन्होंने जीत लिया, सब कुछ हो गया, महाभारत समाप्त कर दिया उसने. With these few words, not few words, I have taken more than 1 hour. With these few words, I am very happy that you have given patience hearing, because आजकल के दिन में patience का बहुत ही अभाव है. So you have given patience hearing. Thank you very much. I must thank the host family. They have arranged this satsang or pravachan, whatever you may say, they have arranged. So thank you very much. I am very happy to meeting you all. Just I was telling, there is a mini India I find here, from Bengali community, Maharashtra, Telugu, then other
state also, Tamil, other state also. So here I find this mini India. Thank you very much for seeing this mini India here. Thank you very much. Thank you. Estonian. And he's also Estonian. Yes, Estonian also is there. Thank you very much. अच्छा now by क्या प्रश्न है? क्या तो you were telling just before. If you would like to ask any question to Swamiji, then you can feel free to just ask any question. अच्छा नहीं सुनो मेरे मैं मजाक कर रहा हूँ मैं तो जाता हूँ बहुत जगह प्रवचन करता हूँ I go to many places I meet many people different kind of people तो क्या होता है you'll find many questions they ask that means they have listened to the discourses and whatever questions has come in their mind वो पूछते हैं जब पूछते हैं तो ठीक है अब जब कोई नहीं पूछते हैं इसका मतलब सब कुछ समझ लिया है और भी दूसरा है कुछ नहीं समझा इसलिए भी कोई प्रश्न नहीं किया है ऐसा कैटेगरी है यस यस एक क्वेश्चन था जैसे हम लोग काफी सालों से बाहर रह रहे हैं छोटे बच्चे हैं हमारे बड़े हो रहे हैं और सनातन धर्म जो हम लोगों का है कंपेयर टू अदर रिलीजन जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में सोचा जाता है या सीखा जाता है हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे वेरिएशंस हैं जैसे कि जैन धर्म है या सिखिज्म है मतलब काफ़ी वेरिएशंस है तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि हम लोग सिटी में पढ़े हुए हैं दिल्ली में पले पढ़े हैं बेसिक ज्ञान है रिलीजन का बुक्स जो पढ़ी समझा तो पहली बात तो बच्चों को हम लोग कैसे एक डायरेक्शन लेके जाए कि उनकी सोच जो है Yes, I have got your point, please. ये बहुत मुश्किल है because now you are living in Australia or outside India और वहाँ का जो वातावरण है वो दूसरा है बिल्कुल दूसरा है when they go to the school when they mix with their friends when they talk to the teacher बिल्कुल different वातावरण है it's very difficult no doubt but one thing you can do आप उसको घर में शिक्षित कीजिए घर में उसको संस्कार दीजिए I was very happy to hear from Sabbasachi, Tarak was son when he was bringing me here and when I got into his car there was a Ram Nam Sankirtana I am very good he would have Maharaj just I wanted to create an atmosphere and what he told I think 1 year uska हुआ नहीं ना बच्चा का 7 months अभी से उसको हम क्या सुनाते हैं देखिए पहले से सुनाता है और जब कोई किसी को आप संस्कार देना चाहते हैं कल्चर करना चाहते हैं इन इंडियन वे और सबसे बढ़िया समय है बचपन से इसको दे रहा है अरे बचपन क्या ये महाभारत की कहानी है जब बच्चा माँ का पेट में रहता है तब वो सब कुछ समझता है सब कुछ बाहर से सुनता है व्हाट इज दैट एग्जाम्पल कौन बताएगा क्या बताइए अभिमन्यु यस वो तो सुन लिया अर्जुन बात कर रहा था ना वो तो सुन लिया कि वो कैसे रचना कैसे लेकिन उससे निकल कैसे पाएगा वो सुना नहीं सो गया तो बचपन से उसको घर में पढ़ाइए करिए बचपन से उसको सिखाइए मुश्किल है कि बचपन सिखाएंगे लेकिन स्कूल जाता है बाहर जाता है मिक्सिंग विद अदर पीपल बच्चों को संस्कृत करना अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इट इज डिफिकल्ट नो डाउट अबाउट इट बट both you have to do it both husband and wife you have to do it definitely you can bring some change in them उन्होंने ये बताया ये बोलो
क्या बोल रहे, तुम ही बोल रहे हो? अच्छा, एनीवे, तो इसको संस्कृत कीजिए। आजकल क्या होता है देखिए, खाली बाहर का एटमॉस्फेयर इसके ऊपर दोष देने से नहीं होता है। When we are young, when we are in the lap of our parents or dadi or grandmother, grandfather, at that time, during that time, we have heard everything about what is called Ramayana and Mahabharata. आजकल अब पढ़ाते हैं कोई? आजकल टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक ये सब क्या सब हैं? Tell me anything about Ramayana and Mahabharata. In very childhood we have known this Mahabharata and Ramayana, the moral stories. बचपन में हम लोग सुना in our very childhood. आजकल तो कोई कुछ करता नहीं है. You don't teach your children. ये जो भारत का जो संस्कार है कि गुरुजनों को नमस्कार करना, respect the elders, is a tradition, very much tradition of Indian tradition rather. You have to teach them. I went to some house, not here, outside. Then his little boy came and I was just sitting and there was a chair. वो चेयर में बैठ के दोनों पैर हमारे टेबल के सामने रख दिए ऐसे. Then his mother came and scolded him like anything. What you are doing? You must know, behave properly. This is not the way. Swami ji respected person. Just दोनों टांग को उसका मुंह के सामने रख दिया, बैठ गया. You tell them, you have to tell them. दूसरी जगह वो देखेंगे, वो ठीक है, वो चलता है, ऐसा होता है. अरे ये तो छोड़ दो. Our children have forgotten how to address our parents. हम तो पहले करते थे पिताजी, माताजी, माँ, बाबा, जो भी हो. Hey, daddy, hey, mummy, what is this? You're calling your parents mummy, daddy. This is not our tradition. It's not in our culture. वो आपको सिखाना पड़ेगा. You are so responsible for that. वो आपको सिखाना पड़ेगा. Difficult, no doubt about it. डिफिकल्ट बोल के छोड़ देंगे तो नहीं होगा. आपको ही घर में उसको पढ़ाना है, सिखाना है, करें. जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा. इसमें देयर इज नो डाउट, कुछ ना जरूर सीखेगा. आपको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी. आपको पढ़ना पड़ेगा. बाहर तो मुश्किल है, हम जानते हैं. हम जो हमारे भारतीय सनातन धर्म का जो कल्चर है उसको तो हमें देना ही है. उसको देना क्या है. अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं सब, बांग्ला भी नहीं जानते, मातृभाषा भी नहीं जानते. बहुत सारे जो बाहर पले हैं, बाहर जिसका जन्म हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. अब करेंगे क्या. अब बाहर तो आना ही पड़ता है नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए. यू कांट हेल्प. लेकिन इस छोड़ना नहीं है, इसको करना है. हाँ ठीक है.